गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ऐसे 530 के ऑडिट सैम्पलिंग मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है? स्टैटिकल सैम्पलिंग है, नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग है। पहला क्या है? स्टैटिकल सैम्पलिंग। दूसरा क्या है? नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग। फर्स्ट है स्टैटिकल सैम्पलिंग, एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: रैंडम सेलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग आइटम, रैंडम सेलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम। फर्स्ट हो गया ये की पॉइंट। दूसरा द यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेल्यूएट सैम्पल रिजल्ट इंक्लूसिव मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। फिर बताते हैं नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग। नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग sampling approach that does not have characteristic of random selection and use of probability theory is considered non-statistical sampling. It is based on judgment. It is based on judgment. फिर आता है सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या है? रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैम्पल may be different from conclusion if the entire population were subjected to same audit procedure. Sampling risk क्या है? Risk that auditor's conclusion based on sample may be different. Based on sample क्या हो सकता है? उसका conclusion different हो सकता है from the actual conclusion if the entire population were subjected to same audit procedure. सैम्पल रिस्क टू टाइप्स के हैं। एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा है टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? कंट्रोल आर मोर इफेक्टिव देन एक्चुअली आर। जितना वो एक्चुअल में है उससे ज़्यादा कंट्रोल इफेक्टिव है। तो इस केस में क्या होगा? कंट्रोल्स आर टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होगा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। इसका इफेक्ट क्या होगा? अफेक्ट ऑडिट इफेक्टिवनेस एंड इज मोर लाइकली टू लीड एन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। दूसरे कंट्रोल आर लेस इफेक्टिव देन द एक्चुअली आर। इस केस में होगा अफेक्ट ऑडिट effectiveness as it would lead to additional work to establish that initial conclusions were incorrect. Test of detail क्या? material misstatement exist when in fact it does not. material exist है पर in fact ये exist नहीं है। इसका effect होगा audit efficiency पे, as it would lead to additional work to establish that initial conclusions were incorrect. फिर हम नॉन सैम्पलिंग देखेंगे। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेज एन erroneous conclusion for any reason not related to sampling risk. जो सैम्पलिंग रिस्क नहीं है वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। फिर टर्म्स रिलेटेड विद ऑडिट सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन each of which is group of sampling units which have similar characteristic often monetary value. ये क्या हो सकता है? मॉनेटरी वैल्यू हो सकता है। पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है इनटू सब पॉपुलेशन, इसमें सबका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होता है सब ईच पॉपुलेशन का। एवरी सच ग्रुप, जो भी ग्रुप बनता है, सो डिवाइडेड इज कॉल्ड स्ट्रेटा। उस पॉपुलेशन से सब पॉपुलेशन जो बनाते हैं डिवाइड करके उस ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटा। ईच स्ट्रेटम इज treated as if it were a separate population and proportionate items are selected from each of the stratum. The group into which the whole population is divided is determined by the auditor on the basis of judgment. The reasoning behind the stratified sampling is that for a highly diversified population, weights should be allocated to reflect these differences. This is achieved by selecting different proportions from each strata. Tolerable misstatement क्या है? Tolerable misstatement is the application of performance materiality as defined in essay 320.
320 में जो डिफाइन किया है, टॉलरेबल मिसटेटमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी to particular sampling procedure. Tolerable misstatement may be the same amount or an amount lower than performance materiality. टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है, सेम अमाउंट हो सकता है या लोअर देन परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी अमाउंट हो सकता है. टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है, रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर सेट बाय ऑडिटर इन रिस्पेक्ट टू व्हिच द ऑडिटर सीक टू ऑब्टेन एन appropriate level of assurance that the rate of deviation set by the auditor is not exceeded by the actual rate of deviation in the population. Rate of deviation from prescribed internal control procedure set by auditor in respect to which the auditor seek to obtain an appropriate level of assurance that the rate of deviation set by the auditor is not exceeded by the actual rate of deviation in the population. ये हो गया tolerable rate of deviation. फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑडिटर्स ड्यूटीज़ क्या क्या है. फर्स्ट है सैम्पल डिज़ाइन साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम. वाइल डिज़ाइनिंग सैम्पल कंसीडर द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. जब भी हम सैम्पल डिज़ाइन करेंगे हम लोग कंसीडर करेंगे दो चीज़ों को, एक तो ऑडिट प्रोसीजर को और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन को. सैम्पल साइज शुड बी सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल. ऐसे सैम्पल साइज सेलेक्ट करना है जो सफिशिएंटली रिड्यूस कर सकता है सैम्पलिंग रिस्क टू एक्सेप्टेबल लो लेवल तक. सिलेक्शन शुड बी इन सच अ वे दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज चांस ऑफ सिलेक्शन. सिलेक्शन इस वे में किया जाएगा ईच सैम्पलिंग यूनिट का उस पॉपुलेशन में इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन का. फिर क्या है दूसरा, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर. परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर appropriate to the purpose on each item selected. If the audit procedure is not applicable to selected item, perform the procedure on the replacement item. If the auditor is unable to apply design audit procedure, alternative procedure to a selected item, consider that item as a deviation. Third, evaluation of result of audit sampling. Auditors will evaluate the result of sample and determine whether the use of audit sampling has provided reasonable basis for conclusion about the population that has been tested. If any error or misstatement identified, auditors will investigate its nature and causes. Causes as per SA 320 misstatement and evaluate their possible effect on the purpose of audit procedure and on other area of audit. In analyzing the deviation and misstatement identified, the auditor would also need to consider the qualitative aspect of misstatement identified by him. Where audit sample selection method. Sample selection method क्या है, 5. Random selection, systematic selection, monetary unit sampling, haphazard selection, block selection. Random selection क्या है, all items within a population stand an equal chance of selection by the use of random number tables or random number generators. Systematic selection, number of sampling unit in the population is divided by sample size to give a sampling interval. Starting point may be determined haphazardly. जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग कैसे भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद लाइक हम लोग 1 to 20 किए तो उसके बाद हम लोग अगला हम लोग आगे का करेंगे ऐसा सैम्पल यूनिट जो डिवाइड किया एज पर सैम्पल साइज गिव सैम्पलिंग इंटरवल. उसके बाद जो रहेगा वो इक्वल ही रहेगा. फर्स्ट वाला खाली हैफेजार्डली कर लेंगे, उसके बाद वाला इक्वल रहेगा. मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इन विच द सैम्पल साइज selection and evaluation result in conclusion in monetary amount. Monetary amount वाले जो भी है वो मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग हो जाएंगे, उसका जो भी हम वैल्यू वेटेड करते हैं. हैप्पीजार्ड सिलेक्शन के सैम्पल आर सेलेक्टेड विदाउट फॉलोइंग अ structured technique. Haphazard selection is not appropriate when using statistical sampling. Block sampling, it involves selection of block of contiguous item from within the population.
Block selection cannot ordinarily be used in audit sampling because most populations are structured such that items in a sequence can be expected to have similar characteristics to each other but different characteristics from items elsewhere in the population. उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पल साइज टर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल. इसमें 4 केस है, उसमें बताना है सैम्पल साइज हम लोग को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है. फर्स्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रेलिवेंट कंट्रोल. इस केस में हम इंक्रीज़ करेंगे. इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन. टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो रहा है तो सैम्पल रिस्क को डिक्रीज करेंगे. इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड तो हम इंक्रीज करेंगे. इस केस में इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन इन द पॉपुलेशन तो इंक्रीज करेंगे. टेस्ट ऑफ डिटेल में भी क्या है? इंक्रीज इन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है सैम्पल रिस्क को इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज इन द यूज ऑफ अदर सब्सटेंसिव प्रोजेक्ट डायरेक्टेड एट सेम असर्शन इस केस में डिक्रीज करेंगे. इंक्रीज इन डिजायर लेवल ऑफ assurance that tolerable misstatement is not exceeded by actual misstatement in the population इस केस में इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट डिक्रीज होगा. इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट और एक्सपेक्ट टू फाइन इन द पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे. स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन अप्रोप्रिएट इसमें डिक्रीज करेंगे. सुबह ऐसे 5:30 ऑडिट सैम्पलिंग होता है कंप्लीट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.